Hello, my dear friends. Once again, I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru. And I would like to request to all of you to subscribe this channel and app as well. Watch, like, subscribe, and share all the things that I am trying to deliver to you, to your friends, in order to get competitive. And today, in the serialized session of practice, I have brought today for you a very extraordinary kind of session. Mostly you see that we ask a question and give you your options to answer. And immediately you recognize the answer if you have ever gone through. But today, in order to sharpen your memory, I have brought for you such a session where I'll ask a question and no option will be given. You have to answer quickly through your own mind. You will have no options. Sometimes things happen in your life that you don't have option, but still you go through. Still you pass through. The same thing is going to happen with you today in this session. A lot of questions I'll ask today, but no option will be given, and you have to be ready to answer questions in your comment. If you don't find answer, I am here to answer that. But that session, or this session, will not go through PDF. It will directly go to you. Because up to what extent I think, with my belief, that this mind is always with you, not option, not PDF. So you must go through things through your mind. And this session, I am going to ask the very first question. The very first question I am going to ask to you, and you have to answer that question. The very first question is, with whom the literary tradition begins in Europe? With whom, the very first question, with whom does begin the literary tradition in Europe? With whom does begin the literary tradition in Europe? पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसके साथ? कौन वह व्यक्ति है जिसके साथ यूरोप में साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मानी जाती है? कौन है वह? अब देखिए, that in Europe, the two civilizations which were the best civilizations considered in the earliest period, these two civilizations were Greek and Roman civilizations. First Greece developed and only after that Rome developed. So literary tradition began in Greece, and the question is with whom it began. So the answer is Homer. With Homer began literary tradition in Europe.
And Homer produced two epics, Iliad and Odyssey, Iliad and Odyssey, Odyssey, Iliad and Odyssey, and these two epics are considered to be the literary antiquities of Europe. Literary antiquities या antiquities आप कह सकते हैं direct. Antiquities ये थी. The very first question that came before you, that with whom does begin the literary tradition in Europe? Your answer was Homer. Homer produced two great epics, and these were Iliad and Odyssey. And Iliad and Odyssey are considered to be the two great antiquities of Europe. Okay? Now, next question. Question number 2. Who is known as the father of Greek tragedy? Who is known as the father of Greek मतलब किसके साथ ग्रीक ट्रेजेडी की शुरुआत हुई? Who is known as the father of Greek tragedy? ग्रीक ट्रेजेडी के पिता, ग्रीक ट्रेजेडी के जनक कौन कहे जाते हैं? आंसर इसका होगा एस्किलस. This is a very important question regarding your exam. Aeschylus is supposed to be the father of Greek tragedy. Now, why he is considered to be the father of Greek tragedy? Why? Only because Aeschylus brought into drama the ideas of dialogues. Ideas of dialogues. And interacting characters. And interacting characters. These two things, ideas of dialogue and interacting characters, were brought into drama, especially tragedy, by Aeschylus, and that is why Aeschylus is known as the father of Greek tragedy. This is a very important question and it may be asked in your exam. आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है. ठीक है? Now, third question. Which of the comedies by Aristophanes influenced Henry Fielding most? अरिस्टोफनीज ने जितनी भी कॉमेडीज लिखी हैं
उन कॉमेडीज में से कौन सी कॉमेडी थी जिसने हेनरी फील्डिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो कौन सी थी? तो योर आंसर इज विदाउट ऑप्शन। अगर आप लोगों को पता है तो आंसर दीजिए। योर आंसर इज द फ्रॉग्स। Exactly, it cannot be written that it was frogs or the frogs. Why? Because we're studying or we're reading just the translation, because these comedies were being written in Greek language and we are studying just the translation. हम केवल translation पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। The frogs के बारे में कुछ और चीजें बता दें that this was the first comparative study. This was the first comparative study and it was written in dialogue form. ये dialogue form में लिखा गया था and this was first comparative study, or you can say that right from here comparative study begins. यहीं से comparative study begin करती है, शुरू होती है। ठीक है। सो दिस फ्रॉग ने अपने समय का बेस्ट कॉमेडी के अवार्ड भी जीता था। तो ये निश्चित रूप से इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया किसको? कॉमिक मोड में लिखा गया है इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु इज known as the father of English novel? Who is known as the father of English novel? किसे हम अंग्रेजी उपन्यास का पिता कहते हैं? Who is known as the father of English novel? You don't have any options, just press your mind and you'll find the answer. In the previous question, I told you that the Frogs was a comedy that influenced Henry Fielding used because it was a kind of comic writing. So Henry Fielding, this very name comes here as answer. It is Henry Fielding. Your answer is Henry Fielding. This is Henry Fielding. Keep inside your brains. Henry Fielding is considered to be the father of English novel. But sometimes it gets controversy in. This is very controversial. Sometimes it is said that there are two fathers of novel. Henry Fielding is considered to be the first father of English novel, and second one is Daniel Defoe. Second father of English novel. Second father of English novel. This is Daniel Defoe. Daniel Defoe is known to be the second father of English novel, while the first father is Henry Fielding. If you were asked that who is known as the father of English novel, you have to take Henry Fielding. You have to take Henry Fielding. Is that clear? Now, next question. Which classical unity
has not been discussed in पोएटिक्स। कौन सी क्लासिकल यूनिटी है जिसका डिस्कशन पोएटिक्स में नहीं किया गया है? विच क्लासिकल यूनिटी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देयर आर 3 क्लासिकल यूनिटीज। कुल मिला के कुल कितनी क्लासिकल यूनिटीज हैं? देयर आर 3 क्लासिकल यूनिटीज। कौन कौन? यूनिटी ऑफ टाइम, place and action. These two, time and action, unity of time and unity of action, have been discussed in poetics, but you do not find unity of place. Your answer is unity of place. Unity of place has not been discussed in poetics. पोएटिक्स में यूनिटी ऑफ प्लेस का डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यूनिटी ऑफ प्लेस का डिस्कशन नहीं है यहां। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ concept of poetry given by Horace in his writing Ars Poetica. Question number 6. The theory of poetry in Ars Poetica by Horace influence influenced whom the most? Now, भाई जो थियोरी ऑफ पोएट्री थी वो क्या थी? द थियोरी ऑफ पोएट्री इन आर्स पोएटिका बाय होरेस वाज डल्स एट यूटाइल। सवाल यह है कि डल्स एट यूटाइल ने किसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो आपको कहना है, सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन, डल्स मीन्स डिलाइट, इट मीन्स एंड, एज यू नो दैट इट इज इन ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज में है, क्योंकि नॉट ग्रीक लैंग्वेज, सॉरी, इट इज नॉट इन ग्रीक लैंग्वेज, इट इज इन लैटिन लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज में है, बिकॉज ये लोग रोम से थे। तो इट इज इन लैटिन। व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, dulse means delight, et means and utile means utility. The full concept is delight and utility. To whom it influenced most, this is your question. And your answer is it influenced maximum or most
किसको इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किया? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज योर आंसर। ध्यान सुनिएगा, योर आंसर इज जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, एंड जॉन ड्राइडन बिकॉज ऑफ दैट गेव हिज ओन थियोरी ऑफ पोएट्री, हिज ओन डॉक्ट्राइन ऑफ पोएट्री, एंड दैट इज डिलाइट। पहले को तो इन्होंने सेम रखा, एंड इंस्ट्रक्शंस। और जॉन ड्राइडन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो उसमें ये आंसर आ जाएगा। कुछ पूछने जा रहा हूं जॉन ड्राइडन संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 परहैप्स आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर। हो सकता है कि सीरीज बिगड़ जाए तो आप उसे समझ लीजिएगा। हु इज नोन एज, हु इज known as the father of English criticism? Who is known as the father of English criticism? अगर हम कहें who is known as the father of criticism, your answer is Aristotle. But who is known as the father of English criticism? Your answer should be John Dryden. पीछे ही मैंने बताया कि मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। John Dryden is known as the father of English criticism. इंग्लिश क्रिटिसिज्म के पिता कहे जाते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया कि होरेस की एक थियोरी थी पोएट्री की, जिसमें उन्होंने डेल सेट यूटाइल की बात की, डिलाइट एंड यूटिलिटी की बात की, तो उससे बहुत ज़्यादा जॉन ड्राइडन प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी एक थियोरी दिया जिसे उन्होंने डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन कहा कि पोएट्री के दो एंड्स होते हैं, एक आनंद और दूसरा उसके जो निर्देश होते हैं, मतलब कुछ जो हमें वो शिक्षा देती है। तो डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन, जॉन ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अंग्रेजी आलोचना के पिता ये कहे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री? Who is known as the father of who is known as the father of old English poetry? Old English poetry simply means Anglo-Saxon poetry. Old English poetry simply means Anglo-Saxon poetry. Who is known as the father of Old English poetry? Your answer is Cadmeon. This is your answer. Cadmeon is known as the father of Old English poetry, or he is known as the father of Anglo-Saxon poetry. What you have to keep in your brains that sometimes Cadmeon is known as the Milton of Anglo-Saxon period. He is known as the Milton. Why? Perhaps he was blind, and that is why he's called the Milton of Anglo-Saxon poetry or period. So these are the important questions that you must go through. आपको अपने दिमाग में रखना है, ये सब बहुत ही important questions हैं। ये ऐसे questions हैं नॉर्मली जिनको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और सारी गलतियां यहीं हो जाती हैं। पता भी नहीं चलता है
कि क्या गलती आप करते चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन comes before you. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आते कि ध्यान नहीं देंगे तो गलती हमेशा हो जाएगी। थोड़ा बड़ा लिखने में बड़ा क्वेश्चन है, बट आई एम ट्राइंग इट। नाउ परहैप्स क्वेश्चन नंबर 9 it is, as Aristotle is known to be the model for all neoclassicists classes in the same way Longinus for dot. This should be your answer. You have to tell. आपका जो आंसर होगा यही भरा जाएगा। सवाल मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे अरिस्टोटल सभी न्यूक्लियस के लिए मॉडल माने जाते हैं, गॉडफादर माने जाते हैं, वैसे ही लॉन्जाइनस किसके गॉडफादर माने जाते हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये किसके लिए मॉडल माने जाते हैं ये। तो आपका जवाब होना चाहिए फॉर ऑल द रोमांटिक्स। ये आंसर है आपका, क्योंकि जो न्यूक्लियस होते हैं वो नियम कानून में बांध कर काम करते हैं, और अरिस्टोटल वाज द मैन of rules and regulations. Longinus dealt with sublimity, and all the romantics actually deal with sublimity. इसलिए इनके हैं ये, ठीक है। Now comes next question before you. Question number 10. Question number 10. Who is known as the father of English poetry? Perhaps in previous session we discussed it, that who called Chaucer the father of English poetry. That's why we are not going to discuss this very question. Another question. Who is known as the morning star of Renaissance? Who is known as the morning star of Renaissance? Who is known as the morning star of Renaissance? किन के संबंध में कहा जाता है कि जब वो पटल पर आए, साहित्यिक पटल पर आए, तो ऐसा माना जाने लगा कि अब रेनेसा आने वाला है। मतलब सुबह के तारे, भोर के तारे कौन कहे जाते हैं? रेनेसा के। रेनेसा एक्सट्रीमली, जो इसकी शुरुआत हुई इन एन एक्सट्रीम वे, वो 1453 में शुरू हुआ विद द रीफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, लेकिन रेनेसा की एक ऑलमोस्ट शुरुआत पहले ही मानी जा चुकी थी। तो किसके बारे में कहा जाता है कि व्हेन ही केम, ऐसा कहा गया कि रेनेसा की शुरुआत होने वाली है।
who is known to be the morning star of Renaissance, then your answer should be Geoffrey Chaucer. He was born somewhere in 1340 and he died in 1400. And you know that Renaissance actually began in Europe in 14th century, but real Renaissance began in 1453 with the refall of Constantinople by Turks. Now, another question related to this very question, 11. In which country Renaissance began? Country did Renaissance begin in Europe? यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण शुरू हुआ? यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण आया? This is a very important question. Everyone knows that Renaissance took place after the refall of Constantinople. It was made fastest one, but a very few people know that in which country it began actually. I would like to tell you the history that when in 1453 refall of Constantinople took place, Turks attacked Constantinople and destroyed it. A drift of intellectuals took place right from Constantinople to Italy. Italy was a very powerful country those days, and hence nobody could attack Italy, and now intellectuals are free to deliver, and that's why all sorts of literary activities, artistic activities began in Italy once again, and hence Renaissance began in Italy. तो Renaissance यूरोप में किस देश में शुरू हुआ? It is Italy. देखिए, जो ताकत होती है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी किसी देश के पास होती है तो कभी किसी देश के पास। आपको पता होना चाहिए कि in the very early period there were two countries, there were two civilizations, there were two empires which were considered to be the most powerful empires, and these were Greece and Rome. दुनिया के सबसे ताकतवर जो देश शुरुआत में हुआ करते थे वो दो देश थे, एक था यूनान, सबसे ताकतवर जहां से सिकंदर महान आया, और दूसरा था रोम. रोम इज स्टिल एन आइडियल सिटी. अभी भी रोम दुनिया का सबसे आदर्श शहर माना जाता है. यूनान के बाद रोम, धीरे धीरे सत्ताएं बदली, और आपको पता होगा कि एक समय आया जब इंग्लैंड दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया. कहा जाता है कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर शासन किया, केवल एकमात्र ऐसा देश था जिस पर इंग्लैंड ने शासन नहीं किया, और वो था नेपाल. नेपाल वॉज नेवर इंस्लेव्ड बाय इंग्लैंड. इंग्लैंड ने कभी भी नेपाल को गुलाम नहीं बनाया. कारण था कि नेपाल इतना गरीब देश था, इट वॉज सो पुअर कंट्री, कि जितना पैसा जितना खर्च उसे गुलाम बनाने में आता उतना भी अंग्रेज वहां से लूट ना पाते. किसी घर में आप लूटने जाइए, लूटने में जितना खर्च आपका लग जाए उतना लूटने पर ना मिले तो आप उस घर को लूटना चाहेंगे? कतई नहीं लूटना चाहेंगे. ठीक है, तो इंग्लैंड बिकेम वेरी पावरफुल कंट्री एंड इट इंस्लेव्ड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया को इसने गुलाम बना लिया था. मजेदार बात देखिए यहां ये है कि इंग्लैंड के बाद जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश हुआ वो इटली. इटली नहीं, इटली तो पहले था, इटली तो इस समय था बहुत पावरफुल देश था. इंग्लैंड के बाद जो सबसे पावरफुल देश आया सामने वो था जर्मनी. व्हेन हिटलर वाज रूलिंग जर्मनी. जर्मनी के बाद आपको पता होना चाहिए अमेरिका. अमेरिका से पहले बहुत ताकतवर था रूस, लेकिन रूस को अमेरिका ने 28 हिस्सों में तोड़ दिया 1991-92 में.
जिसे हम सोवियत संघ का विघटन कहते हैं। फिर अमेरिका ताकतवर आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश उसे कहा जाता है, लेकिन सत्ता बदलती रहती है, अगला देश भी कोई हो जाएगा। चाइना इज ऑल्सो वेरी पावरफुल कंट्री दीज डेज। सो ये इटली में ये शुरू हुआ, ठीक है, इटली में इसकी शुरुआत हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The first folio of Shakespearean plays, ऐसे लिख लीजिए, शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। फोलियो came in which, किस साल शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया? फर्स्ट फोलियो केम इन 1623 posthumously. Posthumously. Posthumously means Mardoparant. When first folio came in 1623, Shakespeare had already died. Shakespeare died in 1616, 1616 में उनकी मौत हो चुकी थी, विलियम शेक्सपियर की। तो 1623 में आया फर्स्ट फोलियो। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एसोसिएटेड विद दिस वेरी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाउ मेनी plays were there in the first folio? How many plays were there? How many plays were there in the first folio? फर्स्ट फोलियो में कुल कितने प्ले पब्लिश हुए थे? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट फोलियो में कुल कितने प्ले पब्लिश हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड 37 प्लेज इन ऑल। कुल मिला के उन्होंने 37 प्लेज पब्लिश किए, 37 प्लेज उन्होंने कंपोज किया। एंड except one, all the plays were published in the first folio. केवल एक प्ले ऐसा नहीं था, केवल एक प्ले ऐसा था जो इस फोलियो में नहीं था। There was only one play that was not included in the first folio. बाकी सारे प्लेज वहां पब्लिश थे। तो आपका जो आंसर होगा वो है 36 plays. 36 plays were there in first folio. Now this is not important that how many plays were there. Important is that which play was not there. कौन सा प्ले था जो वहां नहीं था? Which play was not included in the first folio of Shakespeare that came in 1623, and this play was Pericles. ये एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है। Pericles was the play by William Shakespeare. It was not included in the first folio. फर्स्ट फोलियो में पेरिक्लीज नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। और ये 36 प्लेज, ऑल अदर 36 प्लेज वो देयर इन फर्स्ट फोलियो। ओके, in which year the second folio took place? Next question.
the अगर ये क्वेश्चन नंबर श्रृंखलाएं सीरियल में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट रिमेम्बरेंस इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल. So the way in which year the second folio took place? Second folio जैसे ही आता है तो आप जान जाइएगा कि this is associated with Shakespeare. Second folio is almost associated with William Shakespeare. In which year the second folio took place? Your answer should be 1632. Just 9 years after came second folio, and all plays were included in this. लगभग सभी प्ले यहाँ इंक्लूड किए गए थे. Okay, so these are the questions that I discussed today. ये सारे questions थे. These are very important. Why? Because these questions were without option. Options यहाँ नहीं थे. और जब when you do not find options in your life, you become sharp. You create your own options. If you can answer without options, really that is your intellect. If you always need option, if it simply means that your mind is not sharpened. What is your job? That you must carry questions and answers together in your mind. Suppose if I ask you, suppose I ask you, not if, suppose I ask you, what is the capital of India? And you ask for options, it simply means you are not an intellectual and you don't have brains. Such questions do not need options. You must answer immediately. So this much is for today. Rest of the questions and a lot of questions will be coming before you with the time. But you must comment that questions without options are good or questions with options on PDF are good. I'll wait for your